Whatever you feel like doing, if you are obsessed with it, if you have the madness to achieve it, you will get it. And I will dovetail it with um, one of the verses of Quran. It's Surah Rad, ayat number 11, where God does not change the condition of men if they're not willing to change it themselves. So if you deep down try to search or interpret the meaning of this verse, this means कि अल्लाह ने आपके हाथ के अंदर वो ताकत रखी है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कर सकते हो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, which will blow your mind off, that if you're in a progressive pursuit of a worthy ideal, God becomes a co-worker and he works along with you. What else do you want? So मैंने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हासिल ये है कि अगर आप किसी चीज को दीवानगी से चाहते हैं और उसको अचीव करना चाहते हैं तो there's no stopping you. So that's what I have mentioned over here. And this is a preface, and I would want the audience to read the preface very meticulously, and then the story of my life, and then of course अगर आपको business पसंद है, इसमें business की किताब है, psychology पसंद है, psychology की किताब है, आपको philosophy समझनी है, आपको business करना समझना है, आपको start करना है. So it's a mix of a blend of all these things that I've kept. Great, जबरदस्त। नीम साहब हमारे साथ मौजूद। अच्छा, यहाँ पे इतने सारे लोग मौजूद हैं और मैं चाहूंगी कि कोई आपसे, अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो शाहरुख नदीम साहब से आप कर सकते हैं। I would love to respond to the question. I love your channel. I am Dr. Jamshid. चेक कर लो, 20 लोगों ने ज्वाइन भी किया हुआ है। मैं काफी अरसे से फॉलो कर रहा हूँ आपकी कोई वीडियो। आई डोंट थिंक लाइव पे जाओ ना। मुझे ये बताएं कि आपको ये कब बुक ख्याल बड़ी आया कि अब मैं हाँ, ये क्लिक करो। हाँ, समरी ना करूं, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं ऑडियो आ रही है, चेक करो। उसकी रोशनी में मैं पाकिस्तान के मसाइल का जायजा लूं और कुछ न कुछ हल पेश करूं बुक्स की रोशनी में। ये आपको कब ख्याल आया? It's a very genuine and very relatable question. See, Dr. Jamshed, I dovetail my effort with upliftment of the society and the community. So, किताबों अभी मैंने किया क्यों? इसके पीछे कोई नार्सिसिस्टिक मोटिव नहीं है। इसके पीछे सिर्फ नेशन बिल्डिंग, कौम साजी, इंसान साजी और जहन साजी, ये है एक्चुअल मोटिव। कि किताबों के जरिए अगर विक्टर फ्रैंकल ने मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखी है तो उससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह अगर किसी ने स्टार्टअप करना और उसने 0 to 1 में पढ़ी हुई तो आई थिंक ही इज लूजिंग आउट। सो इसकी जो मोटिवेशन मुझे ये मिली कि आई टीच एट CDM, I take courses at DHS of University, I teach entrepreneurship and new product development over there. तो जब मैं बच्चों को पढ़ाता था तो when I used to refer books, अक्सर औकात I used to see blank faces, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि अगर बिजनेस का स्टूडेंट है, if anyone is into business over here and haven't read Good to Great and 0 to 1 and Masters of Scale and Leaders Eat Last, these are considered to be Bibles in the world of business. तो किताबों की समरी तो हो गई, अब इसको आपने किस तरीके से इस तरह से डिफ्यूज करना है अपनी एफर्ट को, कैसे इंसान साजी हो सके, ज़हन साजी हो सके। सारे तो वो मोमेंट ये था कि साइड में सामने नहीं आना, क्या सामने नहीं आना इसका। I realized almost around 2.5 years back that when I am on my deathbed and I am about to leave the world, Pakistan में on average मर्द हजरात की एज है 68, घबराए नहीं but that's the reality as well. So when I am about to leave this world and I ask myself a question कि मैंने जिंदगी में नेटफ्लिक्स देखा, and this in no way means, I don't mean to belittle, degrade or demean the institution of Netflix or any of the movies. आप movies भी देखें, सब कुछ करें, लेकिन when I am about to leave this world, Dr. Jamshed, तो मैं जब याद करूं अपनी जिंदगी को, मैं क्या सोचना चाहता हूं। मैंने अपने सामने ऑप्शंस रखे कि मैंने 15,000 मूवीज देखी, या मैंने और कुछ अपना टाइम इस तरीके से लगाया, इन्वेस्ट किया, या मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया अपने आप को बनाने में पहले और फिर कम्युनिटी बनाने में, right? So that was the time I decided that I'll diffuse this effort into nation building as well. So I spoke about politics, I speak a lot about history now, and I think I'm more tilted towards books on political science right now. I'm doing a very rigorous
series these days. It's about the reconstruction of religious thought in Islam. मैंने तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मुझे कभी किसी किताब ने इतना परेशान नहीं किया जितना मुझे रिकंस्ट्रक्शन ने किया, क्योंकि उसका मैसेज इतना डेंस, इतना प्रोफाउंड है, एंड इफ आवर नेशन अंडरस्टैंड्स दैट, तो नथिंग लाइक इट. इसी से मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर मिर्ची, कि आई एम ट्राइंग टू, इकबालियात जो है, अक्सर लोग इकबाल को बड़ा मुश्किल समझते हैं क्योंकि शायरी फारसी में है. सो होपफुली इन द फ्यूचर आई एम वर्किंग ऑन एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर जहां पे हम लोग विजुअल्स के जरिए क्लास 1 से लेके बच्चों को इकबालियात सिखाएं ऑल द वे टू यूनिवर्सिटी लेवल. आई थिंक दिस विल रियली हेल्प इन नेशन बिल्डिंग एंड हेल्प आवर पीपल uplift their intellectual thought process. So yeah. Assalamualaikum, hello. My name is Umar Fakhar. Congratulations on launching the book and thank you for writing it. My question is, was there any criteria that you set for yourself to place these books in a certain order? No. I thought of doing that. कि मैं सेल्फ हेल्प एक उसमें रख दूं, फिर साइकोलॉजी एक में कर दूं, फिलोसफी, क्लासिक्स, नॉन फिक्शन पे एक में कर दूं. जो पहली बुक है वो मैंने पर्पसली रखी है. सो एनीवन हु बाइज रीडिस्तान, द फर्स्ट book that I have reviewed or done the commentary on is Man's Search for Meaning. डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल एक शख्स जिसकी फैमिली को नाजी फोर्सेस ने मार दिया, उसके बहन भाई, उसके माँ बाप, उसकी बेगम, सबको they killed everyone. And despite of that suffering, when he touched rock bottom, he became one of the finest scholars of the past century. How did he do that? उनका एक फॉर्मूला है अपनी बुक में, वो लिखते हैं लोगोथेरेपी. लोगोथेरेपी में वो अपने पेशेंट से, वो साइकोलॉजिस्ट एज वेल, वो अपने पेशेंट से पूछते थे, जब पेशेंट आता था उनके पास कि मुझे जिंदगी में कोई डिप्रेशन है, कोई मसला है, डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल यूज्ड टू से, व्हाई डू यू नॉट कमिट सुसाइड? तुम खुदकुशी क्यों नहीं करते? वो कहते हैं ये सवाल इतना प्रोफाउंड था, इतना लगता था लोगों को कि इवन द मोस्ट डिप्रेस्ड पीपल यूज्ड टू फाइंड अ रीजन फॉर नॉट कमिटिंग सुसाइड. वो कहते थे अब ये मेरा पॉइंट है, यहां से वो फिर स्टोरी बिल्डअप करते थे. सो मैंने जानबूझ के रखा है कि उसमें एक कोट है जो अगर हम जिंदगी में अपना ले हमारी जिंदगी बहुत बेहतरीन हो जाए, कि a person who has a why to live for can deal with any how. अगर आपको अपना why पसंद है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. So that's purposefully I think that. Hello, sir. Shahrukh. You might not remember me because you were my teacher in new product development in CBM. Okay. And you might not remember me because at that time COVID शुरू हो चुका था और हम सब अपने webcam बंद करके बैठे हुए थे. Yeah. That's why you don't remember me. Okay. But I remember you profoundly because you were the only teacher in those 3 years who was a person who read books with passion. And I've been doing the same. Books have been my best friend since I was a child. So, thank you. You've had a very profound impact. Honestly. Thank you so much for you saying that. Yes, my name is Tabriz and Haris Said is my best friend. Okay. Yeah. Okay. So, you know, we're kind of... Okay. Yeah, I remember the name Tabriz now. Yeah. Anyway, sir. Sir, there's one thing that is bothering me. It's a generic question. The thing that's bothering me is that while I'm reading books on and on, there are times when I come across few books, I'll name a few, जो ऐसा महसूस होता है कि उनमें रेपिटेशन ज्यादा है, उनमें कॉन्सेप्ट्स कुछ लैकिंग है और एक से दो चीजें बस वो लेके पूरी 300 पेजेस की बुक बना देते हैं. इसमें साइमन सिनेक की स्टार्ट विद व्हाई है. Yeah. और these authors, Simon Sinek, I'm not being too critical, they market themselves so brilliantly through their TED Talks that you feel that their books will alter your life in a way. But when you open the books, just first 50 pages are really good, and the rest 300 maybe, I don't know how many pages are just repetitions. Yeah. So this is a demotivating factor for me as a reader at times, and I feel that maybe I have wasted my money. So how a person, I'm sorry that the question has gotten really long, how a person can, you know, escape that trap, or how a person could, you know, just keep on reading without getting demotivated. Very good question. Tabriz, if you don't mind me asking, how old are you? I'm 25. Okay, you're 25. You're very young. So let me put it this way. Tabriz, you are on a journey, okay, and you are on a beautiful journey. And by the time I think you'll be in your early 30s, your maturity, and I'm not saying you might be very mature for your age right now,
लेकिन इन जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि जब हम अपने 30s में आते हैं ना, क्योंकि हमने अपनी एक्सपीरियंस से सीखा होता है, अपनी किताबें हमने पढ़ी होती हैं। इनफैक्ट एडवर्ड, आई थिंक द नेम इज गिबन, उसने अपनी किताब में द रीजन बिहाइंड द राइज बिहाइंड द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर में लिखा है उस जमाने में कि सब कॉन्टिनेंट में क्राइम क्यों कम है। उस जमाने में क्राइम वाज कंपैरेटिवली यूरोप में ज्यादा था, यहाँ पे कम था। तो उसने उस किताब में बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि हमारे जो माहौल है उसमें जब एक बच्चा बड़ा होता है ना, वो तकरीबन 700-800 साल के एक्सपीरियंस के साथ बड़ा हो रहा होता है। कैसे? हमारा चाचे चाची, मामे मामू ममानी, दादा दादी, नाना नानी, ये सब साथ रहते हैं हम लोग। वी हैव अ जॉइंट फैमिली कल्चर। सो अगर आप इनकी उम्रें बना लें, सम अप कर लें, तो वो 700-800 साल रहते हैं, जबकि यूरोप में ऐसा नहीं है। दे लिव अ वेरी सॉलिटरी लाइफ। तो अगर आप कोई गलत काम कर रहे होगे, आप माँ बाप से बच जाओगे तो आपके दादा पकड़ लेंगे, दादा से बच जाओगे तो नाना पकड़ लेंगे, राइट? सो दिस इज द एनवायरनमेंट वी ग्रो अप इन। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन इज कि आप जो किताबें भी पढ़े हो ना, जिनका आपने जिक्र किया है, ये सेल्फ हेल्प की किताबें हैं। सेल्फ हेल्प का जो जॉनरा है ना, वो 5 से 6 प्रिंसिपल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। कौन कौन से? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू विल फाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एवरीवेयर। कंपाउंड इफेक्ट, डेली एफर्ट, 1% इंक्रीमेंट एवरी डे विल लीड यू टू ग्लोरी, राइट? इसके अलावा व्हाट यू थिंक you can conceive, you can achieve. That's what the law of attraction is, right? And then Simon Sinek talks a lot about leadership, about leaders in class में भी। Self help का जो genre है ना, इसको कोशिश करो in the next 2-3 years you should be done with that. ठीक है? You should be done with the Brian Tracy's of the world, Simon Sinek's of the world, Zig Ziglar's of the world। ये सारे जो self help के बड़े-बड़े authors हैं, इनको पढ़ लो एक दफा, ठीक है? उसके बाद then you come towards philosophy, psychology, and this in no way means I'm discouraging you to take up philosophy or psychology books right now. आप simultaneously उनको पढ़ते रहो, लेकिन जैसे जैसे देखिए, मैं इस बात को ऐसे रिलेट करता हूँ कि किताबें पढ़ता क्यों है? हम लोगों ने अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, कॉग्निटिवली, पर्सनली, प्रोफेशनली। इसीलिए हम ये बुक्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम अपने ज़हन को, अपनी हैबिट्स को बेहतर कर सकें। सो सेल्फ हेल्प सारा लिटरेचर पढ़ लो, इसमें 5 से 6 कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होते रहेंगे। एंड देन रीड अ बुक लाइक बाय यू स्लीप, हम लोग सोते क्यों हैं, बाय मैथ्यू वॉकर, अमेजिंग बुक बाय, राइट? अभी जो मैंने बात की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, आफ्टर रीडिंग the entire self help literature of the world, I found the greatest self help in this book of Iqbal. And then again start reading Iqbal साहब as well, ठीक है? उनकी पोइट्री, उनकी बहुत सारी पोइट्री की तशरीहात हैं, बहुत सारी किताबें हैं। डॉक्टर जावेद इकबाल ने बहुत लिखा है, जिंदा रूह एक किताब है उनकी ऑटोबायोग्राफी है। सो स्लोली स्टार्ट ग्रेजुएटिंग टुवर्ड्स दीज बुक्स, इनको पढ़ लो, एंड देन व्हेन यू फेस द रियलिटी ऑफ लाइफ, देन इट विल परहैप्स बी समथिंग एल्स। Right. यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस दानिश जुनेजू जी। आई बिलीव शायद याद आ गया। अच्छा, मेरा जो क्वेश्चन है दैट रिलेट्स टू दिस क्वेश्चन एज वेल, और जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से भी, कि यू सेड कि एक बंदा बुक पढ़ता है जस्ट बिकॉज द पर्सन नीड्स a fire inside him, or because of the fire that is inside him। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर बंदे की अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल नीड देयर इज अ डिफरेंट रीजन कि व्हाई डू दे रीड बुक्स, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कि अगर हम उनको पर्सनालिटी ट्रेट्स वगैरह में या फिर वैसे ही कैरेक्टराइज करके देखें, इगोइस्टिक लोग नॉलेज गेन करने के लिए अपने आप को बड़ा शो करें। कुछ लोग पढ़ते हैं कि भाई वो अपने बिजनेस में कुछ कर सके, कुछ लोग पढ़ते हैं कि भाई वो कुछ नया स्किल सीख सके। सम पीपल रीड फॉर देमसेल्व्स एज वेल। अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास आया था, व्हाई राइट अ बुक, तो मेरा भी उसके हिसाब से है कि पीपल गो फॉर वीडियोस नाउ, शॉर्ट क्लिप्स सीखने के लिए, ठीक है? वो इन किताबों को प्रेफर नहीं करते। For me personally as well, sometimes a book is a sleeping pill, to be very honest। I read so that I can sleep well। तो
why the book? What was the exact, the question in your mind or the purpose that you had that yes, I have to write a book completely for people to grow इंसान साजी और दिमाग साजी ये जो आपने terms use किए थे उनके लिए why a book? Yeah. So let's do a litmus test, Danish. Good question. Can you name 2 articles that you read day before yesterday online? To be honest, no. That's what the thing is. See, इसकी साइकोलॉजी समझो, इसकी नफ्सियात समझो. बुक क्यों पढ़नी है? बुक के अंदर इल्म मौजूद है जो किसी राइटर ने महीनों रिगरस मेहनत के बाद उसको कंपाइल किया, कंसोलिडेट किया. अच्छा, जब एक किताब लिखी जाती है ना तो उसमें थॉट का ट्रेन होती है, थॉट की ट्रेन होती है, एक मोमेंटम होता है. उस मोमेंटम के अंदर देखो, अब ये किताबें है ना, इन्होंने फिक्शन लिखा हुआ है, अवार्ड विनिंग लिखा हुआ है, मूवी Pakistani authors bestseller. Why have they segregated that? So that anyone who enters the shop, if they are searching for Pakistani authors, they can come right over here and shop for the book. That's exactly how books work. They create a window in your mind, क्योंकि एक author ने जब book compile की होती है, वो बड़ी मेहनत के बाद एक momentum होता है उसकी thought का. वो सारी चीजें compiled होती हैं. वो articles में I'm not belittling the institution of articles or online videos. मैं खुद videos बनाता हूँ. उसके मकसद यही है. ठीक है? Many people believe that books might go obsolete. But whenever I see online, Barnes and Noble is opening, it's one of the biggest bookstores in the world. They are opening, every other day they are opening a new branch. इसी तरह हम लोग दुबई मॉल जाते हैं, Kinokuniya, every time I go there, they have increased their size. So coming back to your question, Danish, I personally think there can be no substitute for books. Why do I say that? मैं अपने students को भी बोलता हूँ कि आपने डिसाइड करना है, दानिश, कि आपने कैमरे के आगे रह के जिंदगी गुजारनी है कैमरे से पीछे. Do you want to become part of the crowd or do you want to highlight yourself from the crowd? If someone is pursuing mediocrity, which in general the entire world is, there should be some people, a group, a set of people who should think to work behind the camera and offer their literature or offer their intellect or in the form of books to the audience. That's what my response to you will be. You want to follow this up with another question? Well, there was one other question, but I thought Kenny thought about Ravi and some other people should also get a chance for questions. वो मैडम पीछे जी जी. Assalamualaikum. My name is Farah. He's my brother of Abrar. He has actually introduced me to you and your channel. एक request है. ये जो reconstruction of religious thought in Islam है, I've tried to read it, but I can hardly go beyond page 18 or 20. Because reading a single sentence takes me about 10 minutes. I would really like to read your version on it. I haven't followed your channel that much. I don't know whether you have made a bit about it or not. एक request इस बात की है. दूसरा, while answering a question, you mentioned a formula that you read for about 54 or 53 minutes. जी जी जी. And there is some working about Yes. for that. Yes. What is that? Okay. So Abrar, I think you're here from Lahore. Yes. Yeah. Abrar DM'd me on YouTube. So he's here. Thank you, Abrar. It's great to see people from Lahore also joining. मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, मुझे इमोशनल भी हूँ, समझ नहीं आ रही कैसे एक्सप्रेस करो अपने फीलिंग. तो मैं स्पेशली अभी आपसे पंजाबी जर्सी डाल के मिलना है. Sure. बाकी क्वेश्चन बड़ा नहीं किया है. जी. कौन मेरा क्वेश्चन बाद में. अच्छा, फराह देखें, ये मैंने 3rd एपिसोड अपनी इस बुक की लाइव, it's gone live. I have dealt with this book for 4 years. It took me 4 years to actually understand what the book was all about. Like I said, it's the most dense book I've read in my life. तो आप मेरी वीडियोस 3 वीडियोस उसमें अपलोड हो चुकी हैं. आप उसको ना आपने तब देख रहे हो वीडियोस को जब आप बिल्कुल आप you're absolutely आपका ज़हन जो है ना किसी इधर-उधर नहीं घूम रहा. You're fully focused. So that's what my thing is. कुछ चीजें जब आप किताब पढ़ेंगे, ये किताब लोगों को क्यों समझ नहीं आती? I found the cause. इकबाल साहब ने खुतबात दी हैं. वो जब खुतबा देने गए अलीगढ़ में, तो उन्होंने ये अज्यूम किया, क्योंकि खुतबे में इतना टाइम नहीं होता ना कि आप पूरी बताएं कि अब बर्गसॉन ने क्या कहा और आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है. तो उनकी अजम्पशन ये थी कि जो ऑडियंस मुझे सुन रही है उनको बैकग्राउंड पता है. उन्होंने बर्गसॉन पढ़ा हुआ है, उन्होंने आइंस्टाइन पढ़ा हुआ है, उन्होंने व्हाइट हेड पढ़ा हुआ है. क्योंकि हम लोगों ने वो उन
फिलोसफर्स या साइंटिस्ट के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, तो वो जो बात रिलेट कर रहे होते हैं वो इंसान को समझ नहीं आती। तो उससे मैंने ये किया, आई टेल यू माय ट्रिक। रिकंस्ट्रक्शन की मेरे पास 10 से 15 किताबें हैं जो रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर तबसरा करती हैं। तो मैंने बर्गसॉन को पढ़ा, व्हाइट हेड को पढ़ा, इसके अलावा आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बिकॉज ही एक्सप्लेन्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ टाइम। सो वंस यू रीड ऑल दीस फिलोसफर्स एंड साइंटिस्ट, देन यू गेट टू नो अबाउट के व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट। आप फिर पढ़ेंगे, आपको फिर भी समझ नहीं आएगा। सो माय थिंग इज कि बी कंसिस्टेंट इन दिस। आप कोशिश करें कि यू स्टिक टू द बुक। लेकिन एक और मैं आपको ट्रिक बता दूं, आप मेरी वीडियो देख के किताब पढ़ेंगी, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत इजाफा हो जाएगा, क्योंकि आपको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा उस बुक को समझने के लिए। सो वॉच माय वीडियोस एंड आई एम प्रोड्यूसिंग, आई थिंक 4 more videos are left on the book, but you start with the first introduction and then go to chapter number 1 and chapter number 2, and next week I am doing chapter number 3 of the same book. Thank you. सेकंड क्वेश्चन था 53 मिनट्स कैसे कैलकुलेट। हाँ सॉरी, हाँ इसकी साइंस ये है, ये दिस इज फॉर एवरीवन, और मैथमेटिक्स ये है कि एक किताब ऑन एवरेज अगर हम लोग 200-250 पेजेस की बुक है ना, उसके अंदर 75,000 वर्ड्स होते हैं, 75,000 वर्ड्स ऑन एवरेज। a human being reads 200 words per minute. So Khabar being the great mathematician, if you divide 75,000 by 200, ये बनता है 375 मिनट्स, 375 मिनट्स। अब यहां से जर्नी बहुत आसान है। अगर आपने महीने के अंदर किताब खत्म करनी है तो आप इसको डिवाइड कर दें 30 से, तो आंसर आता है 12.5 मिनट। So if you read 12.5 minutes every day, you actually end up reading a book every month. Similarly, अगर आपने 15 दिन में खत्म करनी है तो आप डबल कर लें, आप 25 मिनट पढ़ें। और अगर मेरी तरह आपने 5 से 6 दिन में खत्म करनी है तो आप रोजाना 53 मिनट्स पढ़ें। ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है। अच्छा, इसमें वो बुक्स इंक्लूडेड नहीं है जैसे शहाबनामा है या जिंदा रूह है या वॉर एंड पीस है। These are really heavy books, they are very dense comprehensive books, but in general किताबों के अंदर 200-250 वर्ड्स होते हैं। Again, Readistan, I don't want to be pompous about my book, लेकिन इसकी ब्यूटी ये है कि आपको रोजाना 10 मिनट पढ़ना और आप एक किताब खत्म कर लेंगे। So again, that's in 50 days you'll finish. If you read 10 minutes every day, so you will actually finish 50 books in 50 days. So that's the utility of this. जी अब्रार, एक तो ये है जैसे भाई ने आपसे क्वेश्चन किया कि बुक्स को पढ़ना बड़ा मुश्किल है आजकल, तो वीडियोस भी हम देख लेते हैं, उसी से काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जिसमें मुझे ये याद आ रहा था, डॉक्टर सारा से भी यही सवाल किया था किसी ने कि आप लिखते काम है, आपका तकरीर और बयान की तरफ ज़्यादा ध्यान है। उसका मैं एक पॉजिटिव फैक्टर ये देखता हूँ कि उन्होंने जो बयानुल कुरान के ऊपर, तफसीरुल कुरान के ऊपर जो वीडियो बनाई है हर पारा की लहदा जो 2010 में दुनिया से चले गए, आज भी उनके चैनल की मैक्सिमम व्यूज़ पा रही है, जो उन्होंने वो लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिए। तो उनके ना होने से अब हम उनके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकते हैं। तो उसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियोस बना रहे हैं ना, ठीक है, पैरेलली बुक्स भी पढ़नी है, हमने बुक्स को भी चलाना है साथ साथ, और आप अपनी वीडियो को और भी निचोड़ थोड़ा करते हैं, ताकि आने वाले 10 साल बाद 20 साल बाद जो लोग आपकी जो बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट है कि 10 से 15 मिनट की वीडियो है, कुछ मतलब आप ऐसा कर दें जो 25 से ज़्यादा मिनट के, जिसमें डिटेल और डीप किया जा सकता है। इसमें मैं एक छोटी सी ये सजेशन है, वैसे आप बेहतर समझो कि इंडियन जो यूट्यूबर हैं बहुत आगे हैं वीडियो बनाने में इस मामले में। तो दूर आके एक चैनल है, वो बच्चा भी मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, करंट टॉपिक्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर होते हैं। तो मेरे ये सजेशन थी, आपके जो एडिटर्स हैं उसको लेके आपकी वीडियो में मेजोरिटी और ऐड कर सकते हैं। आपकी वीडियो में पिछले 2 साल से देख रहा हूँ तो ऑलमोस्ट एक ही पैटर्न चल रहा है। तो ठीक है, हम आम लोगों के लिए, हम आपके पहले हो चुके हैं, हम बाहर थोड़ा देखें क्या है लेकिन वो लोग भी को भी हमने और अट्रैक्ट करना है। उसके लिए ये कि वीडियो में और मेजोरिटी ऐड कर दे, साथ साथ बुक्स भी चलती रहे, ताकि इंशाल्लाह ताला आने वाली हमारी जो नस्लें उनके लिए आपकी वीडियो पट्टी सेव हो जाएगी। Thank you so much, Abrar, and it's a very good suggestion. In fact, you know, if you see my initial videos, there has been a huge, when I see my initial videos, there has been a huge evolution in the form of how I have done this. And देखिए, इसको I intend to take this up professionally very soon, right? अभी मेरी एक कंपनी है, वो कंपनी भी मुझे चलानी है. There are 2 or 3, then I teach as well. So मेरे पास एक बड़ा limited time होता है इसको करने के लिए. But
seeing the response that I have seen today, I think it has further given me the motivation that I should take this up professionally. And you're right कि videos की length थोड़ी सी लंबी करके उनको again from an intellectual point of view maybe at a high pedestal I should work on that. So it's a very valid suggestion and I'll try to work on that. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मुबारक हो आपको। Thank you. And the most important part you already said कि बड़े स्टाइल पर्सनैलिटी आपकी आपको कंपनी भी चलानी होती है। आई थिंक यू फिल्ड द गैप विच वाज एक्चुअली राइटर्स जो है ना वो बिल्कुल अलग तबके से चलाते थे, आपने तो बिल्कुल मिक्स कर दिया प्रोफेशनल सीईओ एंड राइटर। सो आई थिंक जैसे हम उर्दू में एक वर्ड है निशात-उस-सानिया कहा जाता है, दोबारा रिवाइवल कर देना, किसी चीज़ को दोबारा शुरू कर देना। तो मैंने भी वो 15-20 साल पहले छोड़ दी थी, आपकी मोहब्बत में आपके अंदाज लिखने से दोबारा शुरू कर दी है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड पार्ट ऑफ कि आपने दोबारा बहुत सारे पढ़ने वालों को दोबारा जोड़ दिया। आई एम हैप्पी टू लिबर्टी आई यूज्ड टू कम बट आफ्टर यू नो गिव अप रीडिंग, ये जो ऑनलाइन और जो बुकदानी की बात कर रहा था, इसने हमें बिल्कुल किताबों से दूर कर दिया था। बट द राइट वर्ड यू सेड कि कुरान का जो पहला वर्ड भी वो इक़रा से शुरू हुआ है, पढ़, यानी वो पढ़ने के लिए कुछ ज़रूरी कि यू हैव टू हैव समथिंग। हम बचपन में भी सिपारा जब पढ़ाया जाता था कहते थे इस पे हाथ रख के पढ़ने से जब दिमाग का एक रिलेशन बिल्ड होता है ना, वो ऑनलाइन पे हो नहीं सकता है। बिल्कुल। एनीवे थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you. Very encouraging words. Thank you so much. थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अदनान है और बस मैं शुक्रिया आपका अदा करने आया था कि बहुत शुक्रिया आपने इतना अच्छा काम किया। तो साथ में लिबर्टी बुक्स जो है इस वक्त इकोनॉमिक रिसेशन में ऐसे टाइम में जो है बुक्स की तरफ लोगों को लेके जाना बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. You're welcome. Thank you so much. सर अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। सर रीडर्स आर द लीडर्स जानते हैं आप सब। जी जी। सर जो लेसन्स ऑफ हिस्ट्री थी कि स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन का बड़ा वॉल्यूम था, उन्होंने उसको शॉर्ट करके कर दिया। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री था, वो उन्होंने शॉर्ट एक अपनी मेमोरी के बेस पे कर दिया। आपने सर इन बुक्स का रिव्यू किया, आपने मल्टी डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर आपने पढ़ा और फिर आपने चंद एक किताबें उठाई उनका रिव्यू कर। तो सर अगर आप रिफ्लेक्शन दे, जो इतनी आपकी डाइवर्स स्टडी है, एक आप बुक लिखें कि नेक्स्ट जो आपके रिफ्लेक्शन के पॉलिटिक्स पे, फाइनेंस पे या इन इश्यूज पे, साइकोलॉजी, सेल्फ हेल्प, आपकी क्या रिफ्लेक्शन है जो आपने पढ़ा है, तो ये एक इम्पैक्ट छोड़ेगा। You know what's your name? Zulfikar. Zulfikar, it's a very good suggestion. In fact, I was contemplating the other day what should be the title, what should be the essence of my next book. So you've just opened up a window of thought where I think I should work on something on these lines. But again, इसको जो है ना, Readistan is not only a book; it's a complete movement that is dovetailed with the initiative of book building. उसमें अगेन वो नेशन बिल्डिंग वाली जो मैंने बात की है, कोई भी ऐसा काम जिसके जरिए हम अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए perhaps they do not have the resources. So as a community we need to see कि अगर अल्लाह ने हमें कोई privilege दिया है तो वो privilege हमें transfer करना है in the form of intellect हो, wisdom हो, knowledge हो, financial capital हो, anything of that sort. So I think that's a very good suggestion. So I'll try to work on something which is based around skill building and then psychological upliftment of the Pakistanis. That might be my next venture into books. Sir, we will be waiting for you. Thank you. Thank you. ओके, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे आवाज आ रही है। ओके, सो आई एम आयदा, आई एम अ स्टूडेंट। मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा जो जनरा मेरा मिलता है मुझे, वो सूफीज़्म एंड दर्शम्स, रूमी और इकबाल याद की बात हुई, जिसमें मैं सवाल करने से रुकती हूँ, मतलब मुझसे सवाल रहा नहीं गया। सो आपकी इस बुक में वो मुझे मेरा किक मिल सकता है इसमें, जो जनरा की मैं, आप समझ रहे हैं मेरी जनरा की बात कर रही हूँ, तो इसमें है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो आप मुझे कोई रेकमेंड कर सकते हैं इसके बारे में कि इस जनरा का कोई बाइबल हो। Good question. I'm just trying to recollect. Spirituality के ऊपर, they lost Islamic history है, but that's not exactly your genre. And but इसमें एक second sex है book, which talks about feminism.
So that will actually tell you how what the entire thought process is. Man's Search for Meaning, Interpretation of Dreams by Sigmund Freud. Again, what you are searching for a book like 40 Rules of Love है, तो या इकबालियात के ऊपर आपने 40 rules is like a fictitious yes approach to yes that. yes. So इकबालियात में मैं आपको recommend करूँगा कि जिंदा रूद जो है ना उनकी autobiography, you must read that. It's in Urdu. I don't know how proficient you are in Urdu. बहुत मोटी किताब है, तो उससे आपको ना एक बात आपकी what was his thought process, वो किस तरीके से सोचते थे, उनकी लाइफ की स्ट्रगल क्या थी, उसके जरिए आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा. उसके अलावा एक और बुक है सैयद अमीर अली की, one of the finest books on this topic is Spirit of Islam. और एक मैं आपको एक ऐसी किताब रेकमेंड करने वाला हूँ जो अगर आपको मिल गई तो it has the power to change your thought process. One of the greatest mathematicians which people don't know about in subcontinent, अल्लामा मशरिकी साहब, उनकी बुक है तज़किरा. तज़किरा को सर्च करें and you'll what you're actually searching for, you'll find all the answers in that. So that's what my recommendation is. जी आपके सवाल. जी मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप क्या रेकमेंड करते हैं कि एक टाइम पे आपने उस वीक में एक ही बुक स्टार्ट की हो, ये बेहतर है, या एक वीक में आपने 2 बुक स्टार्ट की हो, कि आपने एक बुक थोड़ा सा एक से बोर हो गए तो सेकंड बुक की शिफ्ट हो गए, और फिर ऑफ कोर्स टाइम टू फिनिश ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये है कि आप इंटरेस्ट अपना लूज नहीं करेंगे, जो मतलब आम जो रीडर्स हैं उनके लिए नहीं. I read 2 to 3 books simultaneously. So I was reading Reconstruction, साथ में होमोलियस पढ़ रहा था, उसके अलावा फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान पढ़ रहा था, उसके अलावा एक और बुक थी डॉक्टर जावेद इकबाल की द कमेंट्री ऑन रिकंस्ट्रक्शन. So I was reading around 3. I usually read around 2 books simultaneously. But my recommendation is एक ही किताब पढ़ें फोकस के साथ. उसको फोकस के साथ अगर आपने पढ़ लिया तो उसका से बड़ा जो है आपको बेनिफिट होगा. So my recommendation is one, if you have the bandwidth to read 2 books, then so be it. बिल्कुल पढ़ें. सर मेरा नाम अजहर है, मैंने आपकी वीडियोस देख के रीडिंग स्टार्ट की है, तो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, लेकिन बुक्स इतनी जैसे जर्नल नहीं पढ़ते थे, अपने सिलेबस की बुक्स वगैरह पढ़ते थे. तो अब न्यू रीडर्स के तौर पर आप कौन सा जनरल प्रेफर करेंगे और सजेस्ट करेंगे मेरे को कि मैं उससे स्टार्ट करूँ? आपकी बुक तो मैंने स्टार्ट कर दी है. Which course are you doing, Hamza? I am doing bachelor's in nursing. Bachelor's in nursing. Yes. Keep sharp एक book है Dr. Sanjay Gupta की. That will give, because it's somewhat related to health sciences. If you are into psychology or philosophy, then you must read Sigmund Freud. Religious philosophy पढ़नी है तो you must read Iqbal साहब. But I would recommend you to read more on. Again, I don't know which genre of literature you like, so I can recommend you n number of books on each. Management sciences है, self-help है. I can recommend you. I can go on and on. But I think more on the philosophy and psychology side. Try to discover that side of human. Sir, how to stay motivated for reading? Because मैं जब भी reading start करता हूँ 10 से 15 मिनट बाद बोर होने लगता हूँ, तो book बंद कर देता हूँ. It might be because you're choosing the wrong book. This is a response to all the people. A lot of people ask me this question कि किताबों की habit कैसे develop करें. So I have a very simple 6-step formula. Number 1, you need to choose the right genre of literature. आपको fiction पसंद है, non-fiction, philosophy, psychology, classics, self-help, suspense, romance, thriller. What do you like exactly? पहले ये आइडेंटिफाई करें कि मेरे ज़हन को क्या पसंद है. At this stage of evolution, जब आप 23-24 साल के हो, तो इस एज में आपको क्या पसंद है. Once you do that, then select small novellas, 100-150 pages की book that will keep you motivated. जैसे Animal Farm है या Alchemist है, The Old Man and the Sea है. All those short books and novellas. Third is install 2 applications in your mobile. One is Goodreads and other is Audible. ठीक है, ये दोनों apps install करें. It will keep you motivated. आपको notifications जिस तरह आते हैं ना Insta के ऊपर, Facebook के ऊपर, so you will get those notifications. Number 4, most of the people make this mistake. Don't use reading as a sedative.
So just before you go to sleep, आप 10-15 मिनट पढ़ते हैं, then you go to sleep. Always read when your neurotransmitters are right there at the top, probably early morning. Fifth is develop the habit of investing in books. आज एक किताब की कीमत एक बर्गर के बराबर है, या पिज्जा के बराबर है. That's what the truth is. So हमजा एक बर्गर sacrifice करना पड़ेगा और invest करना पड़ेगा, so which you are already doing. And the sixth is subscribe to Book Buddy. मेरा नाम अर्शद सिंह है और मेरा एक जो एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने भी कुछ थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी और मैं लोगों की बातें सुन के मुझे लगता है कि लोग लाइफ को बहुत बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं. तो लाइटन अप, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, और ये जानना हमारा जो है ना ये मिस होता है और हम इसको नॉन सीरियस समझते हैं. जबकि मैंने जितना मिला और मिज़ा निगारों को सीखा और समझा और ज़िंदगी को भी, और फिर उससे शौक़ पैदा हुआ कि मैं ये भी पढ़ूँगा वो भी पढ़ूँ. तो ये एक मेरा छोटा सा कमेंट था. और इसके बारे में आपका क्या तासुर है, क्या आप इसमें अपने अगले वीडियो में जो मैंने नहीं देखी और मैं आज से देखूँगा, लेकिन आपकी किताब पढ़ के मैंने देखा कि बड़ी एसेंशियल रीडिंग है जो आपने यहाँ मजमूआ जमा किया है इसका बहुत. और लेकिन आगे इसमें वो रिकमेंडेशन है, कम से कम कोई शौक दिलाना चाहिए कि लोग ज़िंदगी को ना ज़िंदगी लें. ये इतना ये गोइंग इनटू रियली सीरियस टॉपिक्स एंड कॉम्प्लिकेटिंग योर माइंड एंड बिकमिंग ऑल काइंड ऑफ टैंगल्ड अप. I think that is fine. बिल्कुल आपने, that's a very good suggestion. And in fact हम लोग अभी I'm going to for ये मेरा speaking tour आजकल चल रहा है रीडिस्तान में. I'm promoting it on all forums. अनवर मसूद साहब से I'm meeting hopefully next week. What a man. मैं खावर को बता रहा था कि ये लोग अब दोबारा नहीं आएंगे. This is it. इनकी रिस्पेक्ट करो, इनको ऑनर करो, इनको डिग्निफाई करो. So I'm meeting Anwar Masood साहब and what a fantastic person he is. मतलब जिस तरीके से वो आके उनका अंदाज़े बयां है उर्दू के अंदर, पंजाबी के अंदर, कदी दे पे के जानी बेगम. So all of these are very essential things, and like you said, life you need to maintain a balance. So वो balance आता है humor के through when you lighten up things. So I think इसमें मैंने humor के ऊपर probably मैंने नहीं include किया as far as I recall. Probably in the next edition or in the next version I'll do so. ग्रेट मिस्टर शाहरुख, मैं तो खुश ही थी आपके गानों में. और इतना इंटरेस्टिंग सेशन, जबकि हम स्टार्ट में हमने कहा था कि हम 15 to 20 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे, और लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस हुए, लोगों ने आपसे बहुत कुछ सीखा. और जब आपसे मेरी कोई सिटिंग होती है लाइव किसी प्रोग्राम में, तो मैं भी बहुत कुछ सीखती हूँ आपसे. थैंक यू सो मच कि इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है आपका. लोगों तक आप अच्छी बात पहुंचाते हैं, कि कहा जाता है ना कि अच्छी बात पहुंचाना भी एक सदका होता है. तो आज इन द एंड ऑफ द सेशन जो है वो हम चाहेंगे कि कोई मैसेज, जिस वक्त हम लाइव भी बहुत सारे पेजेस पर हैं, तो कोई मैसेज हमारी यूथ को और बुक रीडिंग के हवाले से कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो जरूर दीजिए. Very simple and straight message for the youth. Again, follow the regret minimization principle. This might sound a bit pessimistic, but that's the truth. Everyone has to leave the world. So once you're leaving the world, क्या आप दुनिया में घूमने फिरने आए थे या कुछ मीनिंगफुल करने आए थे? थोड़ा सा सर ये थोड़ी सी ग्रेव बात है, but that's the truth. Okay, people who are in their early 20s, because in Pakistan 70% of the people are below the age of 35. So that's a huge population of youth. So youth need to see when they will be leaving the world. Together, I think it's in 7 habits of highly effective people, that people start with the end in mind. So start with the end in mind and reality. When I'm leaving this, what legacy will I leave? Legacy is a word in English which says, did I matter? क्या मेरी कोई जरूरत थी दुनिया में या नहीं? So just before you go to sleep today, just before you close your eyes, just contemplate कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के अंदर. क्या सिर्फ इकोनॉमिक अपने एक्टिविटी को पूरा करना और तनख्वाह कमाना is the ultimate purpose of my life? Yeah, I can think more and I can contribute to the society more. And one last thing, I want to thank a few individuals, Guruj.
of course, Liberty Books, Samir, for being a great support system throughout this journey of 21 months. And finally, it's through. So thank you, Samir and Liberty Books, for this. Number two, the gentleman I can see wearing the Readistan t-shirt is Shehryar. शहरियार से मेरी मुलाकात हुई थी आज से एक साल ऑलमोस्ट 1 year ago, एंड शहरियार से मैंने कहा यार बुक डिजाइन करनी है. सो शहरियार डिडंट हैड एनी एक्सपीरियंस, लेकिन जिस द वे ही सेड सर ये मैं कर लूंगा, एंड एज सून एज आई रीच्ड होम ही हैड सेंट मी अराउंड 2 or 3 डिजाइन. सो इसका जो कवर डिजाइन है, इसका जो कलर है, ऑफ कोर्स वी वर्क टुगेदर, लेकिन इसका जो डिजाइन है बुक का वो शहरियार हैज डन. सो कुडोस टू शहरियार. Thank you, Shehryar. And of course, I want to thank Kavar as well, who has been my man Friday. He has been the great support system. So thank you, Kavar, for helping me with everything. Yes, and of course, my parents and my family for always being there and for the love they have shown. So unconditional support. So thank you so much, everyone. And lastly, thank you so much, people who have shown up here today. You people are the wind beneath my wings. So thank you so much. नाम मैं सबके शायद नहीं ले पाऊंगा, but everyone, Dr. Jamshed and the team, and Hamza and Danish and Ehsan and Umar and Umair and Ella and everyone I can see. So please, thank you so much. Thank you so much. Thank you, and thank you, Ruth, for Always welcome. Always. सेव करना हो तो कर दो, सेव करो, इसको खोले मुझे. Wow, you got this, huh? This is very nice. हाँ बिल्कुल. Wow. ठीक है, जबरदस्त. सर जी श्योर. उसको सेव कैसे करेंगे? सेव कैसे करेंगे? एंड का ऑप्शन नहीं तो कोई नहीं. पूछे